Welcome students. Today we are starting with the exercise 6.5, that is exercise based on Pythagoras theorem and its converse. Now what the Pythagoras theorem states? Pythagoras theorem states that in a right triangle the square of hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides. What the statement of Pythagoras theorem is? The square of hypotenuse means the square of the side opposite to right angle. Okay, the square of the side opposite to right angle, that is PR. So the square of PR will be equal to the sum of the square of the other two sides. Means the rest two sides are QP and QR. So sum of the square of PQ square and PQR square. So PQ square plus QR square, that we have to prove. And what is given? It is a right angle triangle given to you. So triangle PQR, where angle Q is equals to 90 degree. Now draw QS perpendicular to PR. We have to draw from the right triangle vertex on the hypotenuse. You have to draw a perpendicular from the right triangle vertex to the hypotenuse. So in this way you will be getting the construction. Now let us start the proof. So students, first of all we are taking this triangle, that is PQS and the original triangle, the given triangle PQR, PQS and PQR. So it is very clear that this angle P is common to both the triangles. This angle P is common to this small triangle as well as to this big triangle, the original triangle. And apart from that, we have one angle, that is PSQ, that is of 90 degree, PSQ, the angle is of 90 degree, and the angle PQR, the original triangle angle. So it is also 90 degree. So by these two reasons, angle P common and angle PSQ and PQR both are equal to 90 degree. So the triangles are similar by angle similarity criteria. And now we can write the corresponding sides. Students, you know how to write the corresponding sides. PS upon PQ, then SQ upon QR, and then PQ upon PR. Out of these, which is important? These two are important. We will take these two. PS upon PQ is equals to PQ upon PR. It will give you the result PQ square is equals to PS into PR. PQ square is equals to PS into PR. Now the time for this triangle, the small one and the original triangle. Okay, same proof. This is the angle which is common to both the triangles. Angle R जो कि common है दोनों triangles के लिए, छोटे वाले के लिए भी और बड़े वाले के लिए भी. It is common to both the triangles. Now the angle which is of right 90 degree, this RSQ and PQR. RSQ for the small triangle, RSQ, it is of 90 degree, RSQ is of 90 degree, and PQR is of 90 degree. So in the small triangle, RSQ equals to 90 degree, and in the big triangle, we have angle Q, that is angle PQR, 90 degree. So same reason, again by using CPST. CPST is corresponding parts of similar triangles, and again we will get one more result. So by adding these two results, PQ square PSPR and RQ square RSPR. So when you add, you will have this PR concept, PR, both sides. You can take common PR. What is left is PS plus RS. And what is PS plus RS? PS plus RS is PR again. So it will be PR square. So we have proved that PR square is equals to PQ square plus RQ square. PQ square plus RQ square is equals to PR. So this is all about your Pythagoras theorem. Very important proof. And there is converse of Pythagoras theorem also, but that proof has been deleted this year. And what is the statement of that? Statement is for that converse of Pythagoras theorem, that if in a triangle the square of one side is equal to the sum of the square of the other sides, then the angle opposite to the longest side is 90 degree, is a right angle. This was the converse of Pythagoras theorem. So we will
study and we will use this result also in some of the questions, but the proof has been deleted. Means what is the statement? The statement of converse of Pythagoras theorem is, in a triangle, if a square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. ठीक है, उसी का कन्वर्स है ये, तो ये हम जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे. Now let's move on to exercise number 6.5. Question number 1. Sides of triangle are given below. Sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangle. In case of a right triangle, write the length of the hypotenuse. अब ये एक सवाल जो है ये आप पहले भी कर चुके हैं, जब आपने पहली बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था क्लास 8th में, वहां पर आप ऑलरेडी इसे आप कर चुके हैं. आप देखा यहाँ पर कि उन्होंने कहा है 3 साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की. आपको ये बताना है कि कौन सी 3 साइड्स जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. तो यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा. तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई दो साइड्स का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. जैसे कि 7, 24, 25. आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है. अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा और 25 का स्क्वायर भी 625 होता है. मतलब कि ये जो साइड्स हैं दे आर द साइड्स ऑफ a right triangle and hypotenuse is 25 centimeter. क्योंकि hypotenuse जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है. The longest side of the triangle is hypotenuse. That's why here the hypotenuse will be 25 centimeter. And similarly, the rest of the questions you can just solve. And in question number 2, PQR. In question number 2, PQR is a triangle right angle at P. PQR is a triangle right angle at P. PQR is a triangle right angle at P, and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR, so that PM square is equals to QM MR. So that PM square is equals to QM MR. What you have to prove? You have to prove that PM square is equals to QM MR. देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं. PM square is equals to QM MR. सबसे पहले आप इस एंगल को x ले लीजिए. लेट एंगल Q is equals to x. तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा? Therefore एंगल R will be 90 minus x. अब आप कहो कैसे ये 90 minus x हुआ? बच्चों तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये एंगल 90 डिग्री का है, इसको आपने x माना हुआ है. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर y है तो ये तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है. तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 90 यहाँ आके माइनस होगा, 180 से कितना आएगा? 90 माइनस x. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सो इन प्लेस ऑफ y व्हाट वी विल राइट? 90 माइनस x. सो r is 90 minus x. Now when we take this in triangle PQR, now in triangle PMR, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लिया हमने, PMR ले रहे हैं. अब PMR में क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल PMR देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 माइनस x है, तो ये एंगल कितने का होगा? दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल R is equals to 90 minus x. RMP is 90 degree. I'm talking about this angle RMP, 90 degree. Therefore, angle RPM, it will be equal to
x. Why? Because in a right angle triangle, students, remember this thing, in a right angle triangle always, if you are taking one angle as x, the other one will be 90 minus x. If you are taking this 90 minus x, then this will be x, because this is 90 degree. I have told you the same thing here also. In this case also the same thing I have done. We had supposed one angle as x, so the other angle is 90 minus x. In a right angle triangle, if one angle is x, the other angle will be 90 minus x. In a right angle triangle, remember this always. In a right triangle, one angle is x, the other one will be 90 minus x. So we got this angle as x. Now in triangle RMP and triangle QMP, angle Q is equals to RPM is equals to x. ये हमने प्रूव किया हुआ है. Q को हमने पहले x माना था, फिर RPM भी x आ गया, और यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हमने देखा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री. Due to the reason, what was the reason? Reason was PM is perpendicular to QR. It is given in the question. Now QMP is similar to triangle PMR by angle. So you will write QM upon PM is equals to PM upon MR is equals to QP upon PR, and from these two you will get PM square is equals to QM MR. This is what you have to prove. This is by CBSE. PM square is equals to QM MR. So very important property. This property we are going to use so many times. What we had learned, the best thing we had learned here is in a right triangle, if one angle is taken as x, the other one will be 90 minus x. In a right triangle, if one angle is taken as 90 minus x, the other angle will be x. But it must be a right angle triangle. Okay? So the same in triangle PQR, in the original triangle, we had supposed this angle as x. So angle Q as x, therefore angle R will become 90 minus x. And this is all due to the angle sum property of triangle. Now, in triangle PMR, in this small triangle, when this angle is 90 minus x, because this is also a right angle triangle, PMR is also a right angle triangle. PMR is right angle triangle, one angle is 90 minus x, so other angle will be what? It will be again x. So this you must remember. So RPM will be x. Now Q is x, RPM is x, this angle is x, this angle is also x, and what we have to prove? PM square is equals to QM MR. So PM square is equals to QM MR. तो PM square is equals to QM MR में ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं? QPM and RPM. ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं? QPM और RPM. ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मतलब आपको इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है. कैसे पता किया हमने कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं? PM स्क्वायर, PM दो बार आ रहा है, मतलब दोनों ट्राइंगल जो आप लेने वाले हो सिमिलर करने के लिए, the two triangles which you are going to take to make them similar, PM must come in both the triangles. So PM and QM, so PM QM से क्या बन गया? PMQ, and PM and MR, तो PM MR से PMR बन गया. तो इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स जिन्हें हमें सिमिलर करना है. Q और RPM बराबर है, Q और RPM बराबर हैं x के. एंगल 1 और 2 they are equal to 90 degree. So angle 1 is equals to 2 equals to 90 degree. So triangles are similar. When the triangles are similar, we can write their corresponding sides in the same ratio. Means the corresponding sides are proportional. So PM square will become QMMR. The product PM square, the product of the perpendicular drawn from the square of the perpendicular drawn from the right angle vertex on the hypotenuse. The square of the perpendicular drawn from the right angle vertex on the hypotenuse is equal to the product of the parts of the hypotenuse. जो hypotenuse के parts होते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर
होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रॉपर्टी है आपकी। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए लिख करके समझाया आपको क्योंकि टाइम बच जाता है उसमें, नहीं तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता है उसको ऐसे करने में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वी हैव अ ट्रायंगल ABD and AC is the perpendicular ABD. ABD is a right triangle and a perpendicular drawn from the vertex A. ABD is a triangle right angle at A. AC is perpendicular to BD, so that AB square is equals to BC BD. AB square is equals to BC and BD. Okay, so the same concept we will be using here in triangle BCA and triangle BDA। एक ही वाला ट्राइंगल लिया जैसा पाइथागोरस थ्योरम में किया था, ठीक वैसा ही एक छोटा वाला ट्राइंगल लिया है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है। एंगल B is common, and angle BCA is equal to BAD, both are 90 degree. This is also 90 degree, this is also 90 degree, so both are 90 degree. So triangle BCA is similar to triangle BAD by angle, so BC upon BA is equals to AC upon AD is equals to AB upon BD. This is by CBSE. This implies, now what we have to prove? We have to prove that AB square is equals to BCBD. This we have to prove. We will be obtaining this from these two things. AB square is equals to BCBD. AB square is equals to BCBD. Now next is AC square. Now next again the AC square is equals to CDBD. ये फर्स्ट पार्ट किया था। एक काम करते हैं हम थर्ड पार्ट भी कर देते हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे उसके बाद में। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BDCD। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BDCD है ना। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम छोटा वाला इन ट्राइंगल व्हाट ACD एंड ट्राइंगल ABD। So this angle in this small triangle angle D, and in the big triangle also angle D, they are common, and here in the small triangle we have ACD of 90 degree and in the big triangle we have DAC of 90 degree. So triangle DCA is similar to triangle DAC by angle, and what you can write, DC upon DA is equals to CA, no, DAC, this is CDA, so CD upon AD, CD upon AD upon AC, and CA upon DC. So DA by DA comes twice, I am not getting ACD and ABD, okay, AD is coming twice. So what we have to prove in the third part, AD square is equals to BDCD. There is something wrong. We have taken triangle ACD, ACD, we have taken triangle ACD and ABD. D is common, DCA is of 90 degree, DAB
DAB of 90 degree. So DC upon DA, AC upon AB, and AD upon BD by CPCT. So from these two you will be getting AD square is equals to DC into BD. AD square is equals to DC into BD. Now we had proved the two triangle, that's this triangle similar to the original triangle, and we had proved BAD, ABC similar to BAD, and this is what I'm writing here, DCA and DAB. This should be B. Sorry, this should be B. DAB. Okay. Now listen carefully. We had proved the two parts. Now we are going to prove the third part. Okay. Now what is the third part? In the third part we have to prove that. Sorry, we had proved the first and the third part. Now we are proving the second part. In the second part we have to prove AC square is equals to CDBC. AC square is equals to CDBC. The same we had proved here also. See, PM square is equals to QMMR. PM square is equals to QMMR. This already we had proved. The same thing we had proved. So in a similar way you can prove the second part also. But I am giving you another way, method to prove the same result. Now see, what is this method? Because we had proved this triangle similar to the original triangle and this triangle similar to the original triangle, therefore these two triangles will become similar. Two triangles similar to the one triangle, they are similar to each other. अगर दो triangles किसी एक triangle के similar होते हैं तो वो आपस में भी similar होते हैं. लेकिन बस अंतर इतना है, जैसे नाम जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है? BCA और BAD. अभी यहाँ BAD नहीं है, DAB लिखा हुआ है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ठीक कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा ACD सिमिलर टू BAD. सिर्फ मैंने इतना सा चेंज किया है, इंटरचेंज किया है. D को बाद में लिखा, A को पहले लिखा. यहां पर D पहले था, A बाद में था. इनको इंटरचेंज किया दोनों को, और इधर भी इन दोनों को इंटरचेंज किया. तो इसमें भी BAD आ गया, ट्रायंगल BAD. यहां पर भी ट्रायंगल BAD आ गया. तो इसको अगर अपन सेकंड इक्वेशन माने और इसको फर्स्ट इक्वेशन माने तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1 and 2 triangle BCA will be similar to triangle ACD. तो आप यहां क्या लिख सकते हो? BC upon AC is equals to BC upon AC is equals to AC upon CD is equals to AB upon AD. तो आपको प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना था AC square is equals to BC CD. ये आपको प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट. तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. कंसेप्ट कौन सा लगाया? टू ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर टू द सेम ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर. वो दो ट्राइंगल्स जो आपस में सिमिलर हैं, वो दो ट्राइंगल्स जो किसी एक ट्राइंगल के सिमिलर हैं, वो आपस में भी सिमिलर होते हैं. ये हमने कंसेप्ट यहाँ पर लगा करके इसको प्रूफ किया है. ठीक, अब अपन बढ़ते हैं आगे और कुछ एक सवाल देखें. हमसे कहा गया है ABC is an isosceles triangle right angle at C, prove that AB square is equals to twice of AC square. It is given that ABC is an isosceles right triangle at C. ABC एक isosceles triangle है right angle at C. जब कोई भी right angle triangle एक right angle triangle isosceles होगा तो उसके right angle को बनाने वाली साइड्स ही बराबर होंगी. जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, ध्यान सुनिएगा, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तो राइट एंगल को बनाने वाली साइड्स ही बराबर होंगी. हाइपोटेन्यूज किसी के बराबर नहीं होता. तो आपने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
BC square. Not AC square is equal to AC is equals to BC. As triangle ABC is an isosceles triangle. Okay. Now, as it is also an right angle triangle, so AB square is equals to AC square plus BC square by Pythagoras theorem. Now, as AC is equals to BC, so in place of BC we will write AC, क्योंकि AC काय के बराबर है, BC के बराबर है, तो क्या प्रूफ हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना था. चलिए फिर और आगे आते हैं. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है. आपको दिया हुआ है AC बराबर BC. इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब हम क्या AC स्क्वायर की जगह पर BC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AC काय के बराबर है, BC के बराबर है. तो हमने क्या करा, क्योंकि AC BC के बराबर है, इसीलिए AC की जगह क्या लिख दिया, BC लिख दिया. और क्या रिलेशनशिप बन गई, देखो जरा ध्यान से. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स में रिलेशनशिप है. एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ट्राइंगल ABC, उसकी तीनों साइड्स में ये रिलेशनशिप आ गई है. इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C. ये भी ध्यान रखिएगा, राइट एंगल एट C, क्योंकि AB अगर हाइपोटेन्यूज है, आप देख रहे हो यहां पर AB सबसे बड़ी साइड बनकर के आ रही है सामने. AB अगर सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि AB स्क्वायर हो रहा है, AB अगर सबसे बड़ी साइड है तो उसके सामने C ही होगा, इसीलिए इट इज राइट एंगल एट C. सो दिस इज क्वेश्चन, this question also we had proved. Now let's move on to the question number 6. It is about an equilateral triangle. So how to get the hypotenuse of the altitude of an equilateral triangle? Again by using Pythagoras theorem. How we can obtain the altitude of an equilateral triangle? The equilateral triangle with side 2a. ये अच्छी बात है कि इस equilateral triangle की साइड हमको क्या दी गई है, 2a दी गई है. a दी जाती तो थोड़ा सा टफ हो जाता. अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये D है. अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर AD एल्टीट्यूड है BC पर, therefore या फिर this implies that AD is also perpendicular bisector of BC also, है ना. AD परपेंडिकुलर है BC के अगर, तो AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्योंकि ट्राइंगल ABC क्या है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा BD और DC बराबर हो जाएंगे और वो A के बराबर, क्योंकि पूरा 2a था. अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांटेगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा. नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD h square plus a square is equals to, this is 2a square, so h square is equals to 4a square minus a square, h square is equals to 3a square. So the value of the altitude will be √3a units. In this way you can use, this is what we have used here, Pythagoras theorem. We had used Pythagoras theorem, and by using Pythagoras theorem we can prove it like this. Now students, this is all about six questions in this exercise. The next questions we will be discussing in the next video, so watch this video carefully and solve the questions, practice the questions. Thank you students.